So, in the previous lecture, we already discussed about some points like Ohm's law, and we discussed about the states of the Ohm's law. Then we discussed already about their characteristics, ohmic and non-ohmic characteristics, and then resistance and resistivity, the basic definitions of the resistance, and then we have already covered the definition of resistivity and the factor affecting the resistance, and specific resistance is also covered in the previous lecture. And you all know about the resistivity, now the basic. And in this lecture, we will start from the resistivity table. So you can see here that you can see in the table there are the two columns in the table. The first column shows the material, and the second column shows the value of resistivity at 23 degrees Celsius. And the value of resistivity is given in ohm meter. Okay. So we all know about that. The resistivity is depends upon the material of the conductor. We already discussed about this factor, that the resistivity is depends upon the material and material of the conductor. So you can see here in the first column the material name silver, copper, gold, aluminium, tungsten, and iron, and such type of other materials are given in this table. And their specific value of resistivity is given. For example, if we talk about the silver, then the value of resistivity at 23 degrees Celsius is 1.59 into 10 raised to power minus 6 ohm meter. Okay. So if you're talking about the copper, then it vary by the 1.68 into 10 raised to power minus 6 ohm meter. So there are different material, and according to the material there are different the value of resistivity in given in the ohm meter. So it's proved by this table that the every material have the specific value of resistivity at particular room temperature. Okay. So now we will discuss about the types of resistance. So there are a fixed resistance and second one is the variable resistance. So fixed resistance you can see in the pictures. This picture shows the various types of the fixed resistors, and as the name indicate, their value does not change under the constant physical conditions. So they are set at a particular value. So they call fixed resistance. कि फिक्स रेजिस्टेंस का क्या है सीन कि उनकी वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, है ना। मैन्युफैक्चरिंग टाइम के ऊपर जैसा रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेट किया गया, जिस जिस फिजिकल कंडीशंस के ऊपर उनको बनाया गया, वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये यूजर्स के हाथ में नहीं होता है कि टू चेंज द वैल्यू ऑफ फिक्स रेजिस्टेंसेस। So that's why these called the fixed resistance. एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल रेजिस्टेंस, अगर हम बात करें वेरिएबल रेजिस्टेंस की, तो लैब के अंदर आपने देखा होगा एक रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट. So as the name indicate, their resistance can be easily changed by changing the area of cross section and length. Changing the area of cross section and length, है ना। इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ को मैं चेंज करके इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंसेस. That's why it's called the variable resistances, because we can easily change by changing the area of cross section and the length. Okay. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के केस में क्या है कि हम लोग इसके जो एरियाज को, ये जो पिन दिख रही है तुमको, ये पिन, इस पिन को क्या है कि ये मूविंग पिन है, ये यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए इस तरफ जा सकती है. तो ये डिसाइड करती है कि कितना रेजिस्टेंस सर्किट में आ चुका है. सपोज दैट यहाँ से ये इनपुट, अगर ये इनपुट टर्मिनल लिया है तुमने, ये वाला इनपुट टर्मिनल, ये इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट वाला है. तो रेजिस्टेंस का क्या है कि अभी इतना 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 रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर है, मैं इसको और मूव करता हूँ इस तरफ, तो क्या है कि ये
अगर यहाँ तक आएगा तो अभी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, फिर अगर इसको और बढ़ा देते हैं तो फिर यहाँ तक और वैल्यू आ जाएगी टोटल। तो बाय चेंजिंग द क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, दिस वायर, we can change the value of resistances. Okay, is it clear to all? Is it clear to all? Yes, sir. Okay, okay, beta. So now we shifted on the electric circuit and its component. So what is electric circuit? The question is arise here. The what is the electric circuit? So it's given by a closed path in which the electric current flow is called an electric circuit. A closed path in which electric current can flow is called an electric circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं कि एक क्लोज पाथ होता है, क्लोज पाथ। यू कैन सी हियर इन द बोथ पिक्चर्स देयर आर ए क्लोज पाथ। इस क्लोज पाथ के अंदर अगर करंट फ्लो करती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। So there are two types of the circuits. There are two types of the circuit. One is open circuit and second one is closed circuit. So जब सर्किट ओपन होगा, there if there is a open circuit then there is no current flow through it. If there is a open circuit there is no current flow through it. अगर ओपन सर्किट है तो वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में। If there is a closed circuit then current flow continuously through it. Okay. अगर सर्किट क्लोज है, क्लोज का मतलब कनेक्शन पूरा किया हुआ है, स्विच ऑन है, ठीक है। अभी सर आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डायग्राम। तो फर्स्ट वन लेफ्ट हैंड के बारे में देखता हूं। अभी देखो कि ये स्विच बता रहा है, देखो स्विच है, ये स्विच क्या कर रहा है, ये क्लोज कर दिया इसने, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। क्लोज होते क्या है कि देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि क्लोज होते ही करंट को फ्लो होने का एक पाथ प्रोवाइड हो जाता है, करंट फ्लो होने लग जाती है। तो इन अ क्लोज सर्किट करंट फ्लो कंटिन्यूसली एंड द बल्ब ग्लो। एंड इन द ओपन सर्किट, जब ये सर्किट ओपन होता है देन देयर इज नो करंट एंड बल्ब कनेक्टेड इन दिस सर्किट इज नॉट ग्लोइंग। ओके, क्लियर? इज इट क्लियर? ये बैटरी लगी हुई है, ये स्विच है और ये बल्ब है। तो जब ओपन और क्लोज सर्किट का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, तो अब आप ये देखेंगे कि राइट हैंड साइड डायग्राम में देखेंगे कि दिस इज द सीरीज सर्किट, बैटरी लगी हुई है एंड दिस इज द स्विच, दिस इज द स्विच देखो। और अब जब ओपन है ना स्विच, तो कोई भी बल्ब नहीं जल रहा। अब ये क्लोज होते ही बल्ब क्या करता है, ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। देखो बल्ब ग्लो हो गया, अभी यहाँ पे गई करंट, दूसरा वाला बल्ब ग्लो हो गया। तो देखना, अभी इसको देखना कि अभी ये करंट यहाँ पे चल रही है, देखो यहाँ पे ये स्विच के पास, ठीक है। अभी यहाँ पे करंट है, अब ये वाला बल्ब ग्लो हो गया, ठीक है। अब देखना कि ये करंट कहाँ पे पास होती है, दूसरे वाले के पास में पास होती है, दोनों। तो सीरीज सर्किट के अंदर क्या है, बैक टू बैक देर आर बैक टू बैक लोड कनेक्टेड इन द सीरीज सर्किट। सीरीज, when we talking about the series circuit, then there are two load are connected, two and the more load are connected back to back. Okay, so it's called series connection. In the parallel connection, their input terminal is connected at the one end and their output is connected at the other end. एक एंड तो एक एंड से कनेक्टेड है, दूसरा वाला एंड दूसरे वाले एंड से कनेक्टेड है। तो दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल सर्किट। और पैरेलल सर्किट के अंदर भी तुम लोग देखोगे कि करंट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। इन द पैरेलल सर्किट करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखो यहां से करंट आया, सेकंड वाले में देखना, और इस पॉइंट से दो हिस्सों में चला गया, एक नीचे चला गया, एक ऊपर चला गया। बट इन द सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम, है ना, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस लोड एंड देन दिस लोड। बट इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट, current is not same. The half of the current is going through this line and the half of the current is going through this line. Okay, so this is a series and parallel connection. This is an example of series and parallel connection. Now there are certain symbols is used in the electrical engineering. So you can see the first one is the electric cell. First one है electric cell, पहला वाला है electric cell.
सेल को जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसका सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, one plus and the second one is minus, plus and minus is shown the electric cell, only cell. When we talk about the battery, if we talk about the battery and the so the battery is defined by a combination of cells. जब इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे थे तो एक सेल की बात कर रहे थे, तो दिस इज ओनली वन सेल। ओके, अगर हम बैटरी की बात करते हैं, बैटरी की, अब हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो बैटरी का मतलब हो गया ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। So you can see in the symbolic representation there are many cells connected, there are many cells are combined together, 1 2 3 है ना, 1 then 2 and then 3, there are many cells in connected in combination, combined together, then it's called battery. So what is the difference between electric cell and a battery? So this is the basic difference between the electric cell and the battery. So electric cell is a component and the battery is also a component, but it is a combinations of the cells, is a combinations of the cells. ये सेल को कंबाइंड, बहुत सारे सेल्स को कंबाइंड करके बनाई जाती है, इसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द प्लग की और द स्विच, open switch, then its a symbolic representation is given by this symbol. This indicate the open switch and this indicate the close switch, this indicate the close switch, and the wire joint is indicated by this equation, the wire joint is indicated by this equation, and the wire crossing without the joining, if we talking about there are two and the more wires, there are two wires, and so we represent these symbols by the two wires. This means they are connected to each other, they are touched to each other, and this means they are untouched and they are not touched to each other. And if we talking about the electric bulb, then it's shown by these symbols, this one and this one. And then when we talking about, if we talking about the resistor, then the resistors is shown by this symbols, this symbols. If we talk about the variable resistance and the rheostat, then we draw this symbol for the variable resistance, and you can also put this symbol also. And if we're talking about the ammeter, then the ammeter is represented by this symbol, and the voltmeter is represented by this symbol, this symbols. Okay. So when now we shifted on the measuring devices, and the measuring devices, there are two basically used measuring devices. One is the ammeter, which is used to measure the current, and the second one is the voltmeter, which is used to measure the voltage in the circuit. Okay, so the first one we study about the ammeter. Then it must be connected in series. The ammeter is always connected in the series in the circuit. Okay, so ammeter is always connected in series, in the circuit. So you can see in the diagram, there is a ammeter is connected in the circuit, there is a ammeter which is connected in the circuit. So one terminal is connected to the one point of the battery, and the second terminal is connected to the at the load point. So the positive side of ammeter must be connected nearest to the positive terminal of the battery. So the positive side of the ammeter is must be connected. You can say the must be connected to the nearest positive terminal of the battery. You can see here, this is the positive terminal of the battery, and it must be connected to the positive terminal of the ammeter. You can see here. Okay, and vice versa. तो एमीटर को क्या करते हैं, एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट मेजरमेंट के लिए काम में आती है, करंट को मेजर करती है सर्किट के अंदर कितना करंट है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो काम में आती है.
ये कैसे कनेक्ट की जाती है सर्किट में? सर्किट में इसको हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज इन द सर्किट। वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है उसको इस एमीटर के पॉजिटिव एंड के साथ में ही कनेक्ट करेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। और दूसरा एंड सर्किट के किसी भी लोड पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। सो ये एमीटर है। If we talking about the voltmeter, then voltmeter is always connected in the parallel in the circuit. Voltmeter must be connected in parallel to the circuit. Okay, so you can see here, this is the battery, and the positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the voltmeter, and the negative terminal of the battery is connected to the negative terminal of the voltmeter. कि बैटरी का पॉजिटिव को एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और बैटरी के नेगेटिव को वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो देर इज अ वोल्ट मीटर, है ना। ओके, देर इज अ वोल्ट मीटर। सो बैटरी का पॉजिटिव एंड वोल्ट मीटर के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया और बैटरी का नेगेटिव एंड वोल्ट मीटर के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया मैंने। ओके, तो ये पैरेलली कनेक्ट हो गया, पैरेलली कनेक्ट हो चुका है। तुम देख सकते हो इसमें सर्किट के अंदर बैटरी ये है, बैटरी ये दिया हुआ है, सेल, कोई सेल दिया हुआ है, बैटरी दी हुई है प्लस माइनस। तो इसका जो प्लस है वो वोल्टमीटर के प्लस से कनेक्ट हुआ, मतलब पॉजिटिव एंड से। बैटरी का जो नेगेटिव एंड है उसको वोल्टमीटर के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया। तो दिस कनेक्शन शो द पैरेलल कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज शो द पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन का टाइप है। तो हम लोग इसको सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं कि सर्किट में कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी वोल्टेज आ रही है सर्किट के अंदर। ओके, सो have you any problem in this? So you can ask me if you have any problem No, in this sir. lecture, then you can ask me.